So good afternoon all. Thank you so much for joining in. I think थोड़े से basic concepts फिर से revise कर लेते हैं. I think that's where we are. So between Aniket and Prashant, why not you guys start with a very quick view on what we did last time? Maybe like a 5-minute recap, and then we'll get started with screening stocks for today. Let's get on to a small recap from our last session. So we talked about the major pillars. That is, before we look into any stocks, we would have to see these three conditions. That is the stock in a good sector, or and the field as such segment, is the segment developing, and is there any innovation happening in that sector? Second, once we see the sector is good, we go into the stock specific, see how good the stock is performing in terms of fundamental values, be it your price to equity ratios, return of equity, return of assets. We saw in quite a large list of ratios. Last is looking into the management integrity. That is how the promoters are handling the company. Has the promoter holding increased? Is it been a good choice for foreign institutional investors and domestic institutional investors? So these three parameters, we go one by one. We had a look at it, and we also went through the 6-step framework, right? So first we started with the industry scan, then going into the stock specific, looking into the company's history. After looking at the company's history, then checking on the balance sheet. How is the profit? How is the sales been? How is it growing for the last 3 years in terms of sales and profits, and also debt ratios. So next came is key ratios. Key ratios, be it PE ratios, PB ratios, debt to equity ratios. We saw in a multiple list of ratios attached to each stock. At last, we got to a point wherein, okay, fine, we know fundamentally this stock is good, right? So we came to a point where we would have to see qualitative, how is the news surrounding this stock? How is it performing on media as in sentiment wise, right? Last, but is the price value verdict, which you'll be learning more in the next upcoming sessions. A small recap on list of ratios which we talked about: valuation ratios, profitability, liquidity, growth, and efficiency ratios. Let's get to the screener thing which we created in the last session. So is my screen visible? Yes, Prashant. So this is the screener which we created last session. So what we had is any stock which is part of the Nifty 500 segment. Market cap should be more than 100 crores. Net profit should be greater yearly basis, greater than 20%, and the quarter-on-quarter net profit is positive. We add in yearly PE ratio, number is greater than 10. Price to book value greater than 3. EPS should be positive. EPS should be higher than the previous year EPS. And these two were technical indicated statements, that is conditions. One is the volume should be more than 1 lakh, the traded volume, and the close should be greater than 30. The market price should be greater than 30. Yeah. So we did the stock. We got 135 stocks. We saved this. We opened screener. We created a new watch list. Imported. This is the thing. This is the same process which we did last time. Yeah. So we have around 135 stocks. We selected. We delved more into IT stocks. We looked into it, and we finally figured out HCL Tech to be a good pick. Yeah.
So what we are gonna do this time, in addition to this, let me open the same thing. Okay. So in addition to these conditions, what we will add is now our goal is to pick good small cap and mid cap stocks. Why small cap and mid cap stocks is these stocks has a greater probability to compound. Okay. So what I'm doing here is I'm adding one more statement here, wherein I'm putting a condition wherein the market cap is less than. So here we have set initial condition to be market cap greater than 100. Now I'm adding another condition wherein market cap is not higher than Nifty 50 stocks. The lowest market cap is around 51,000 crores. So what I'm saying is I'll put 25 here. Okay, so we are looking for stocks in the Nifty 500 segment, which has a market cap between 100 crores and 25,000 crores. So predominantly small cap and mid cap stocks. In addition, what could I add? Let me just a minute. So this is the reason why we are doing this is because we want to ensure that we capture the small caps. The larger cap stocks who are already at more than 25,000, 50,000 crores, those will not compound at that rate. वो double, triple, double होने में बहुत time लग जाएगा. But ये जो smaller stocks है, 5,000, 10,000 crore वाले, they have more probability of increasing multiple X. And for that we are also updating the condition. तो वहाँ पर आप additional conditions आएंगे to identify higher growth rate and higher increasing potential. Yeah, so I added one more. Really, Aniket and Prashant are being a little bit modest. What they're trying to do is find out a multi-bagger, even if it is 2 time, 5 time, 10 time. But they are trying to figure out a company, which can give a multi-fold return, right? That is what we are trying to figure out here. Yeah. So the next condition which I'm adding here is ROCE. I'm giving ROCE of the company should be greater than 20. Okay, so it is the same conditions. I'm just adding 2 more conditions to this list. One is restricting the company with a market cap of not higher than 25,000 crores. And ROCE of that company should be greater than 20%. Now let's. ये ROCE क्यों greater than 20 लिया है ये बताएंगे क्या आप यहाँ पे participants को? Yeah. So for that we would have to go back to the cheat sheet which we gave, and so generally if you see a company, a stable company, what does ROCE mean is that the amount that is invested on the company, and for that amount what is the returns which you get. Yeah. So it is also prudent that if an ROCE is greater than 20%, it means that the amount of capex which is given and it is utilized, right? So that capex which they invested for the year, that is past year, has given close to 20% returns, right? Correct. So basically जितना भी capital deploy कर रहा हूँ उसका मुझे कितना return मिल रहा है, something you are actually putting in here, right? तो आप बोल रहे हो कि अगर मैंने जितना भी capital deploy किया उसमें से अगर मुझे 20% का return मिल रहा है तो that is a healthy return that company is clocking, and that's why you are thinking that this company has good potential to grow in future, right? Yes. Just for the audience. हाँ, ठीक है. Yes. And when we go for more complex things, we will look at year-on-year growth. भी हम लोग 1 साल का देख रहे हैं, 3 साल का देख रहे हैं, 5 साल का देख रहे हैं. But as we grow, we will also look at कि बाबा 5 साल continuously 20% रहा है कि नहीं, या at least 10% रहा है कि नहीं. So it's not just 1 year performance, it's 3 year, 5 year performance. हाँ, तो बेसिकली जस्ट टू से कि कंसिस्टेंटली क्लॉक कर रहा है कि नहीं. एक बार फ्लूक से हो सकता है हो जाए, बट आप अभी इसका कंसिस्टेंसी चेक करो कि अगर कंसिस्टेंटली हर ईयर वो अगर वो रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब कि कंपनी में देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग दैट इज हैपनिंग इन द कंपनी, है ना? Yes. So I'm going to run the scan, and now we are down to 32 stocks. Okay, we'll do the same process. We will export it to an Excel file, open screener, create a new watch list for this screener, let's say fundamental mode. तो प्रशांत ये स्क्रीनर आप शेयर करोगे with our one users?
Yes, we could share it. Yeah. ठीक है, we can share it. So Shantanu, make a note of it. ये screener का link हमें भेजना है ना, public करके इसको. Yeah, so we have around 32 stocks here. I hope that you remember the CMB last time which we did. All right. So out of this 32 stocks, we'll go maybe industry wise. Let's start with okay, that is one stock in auto ancillaries. This is a what segment which everyone could relate to, right? So now we have Jamna Auto Industries. So I am not sure if you guys remember, but I'll do a recap of the conditions which we had for the last time on this stock. Okay. So the first condition which we see is whether the PE is lesser than the industrial PE, right? So this is 23 and industrial PE is 27.9. So this has passed the first condition. Second condition was ROE. ROE is it greater than 15% for automotive sectors? Yes, it is greater than, it is 22.92%. We looked into debt to equity ratio. Let me see. Yeah, debt to equity ratio is here. Debt to equity ratio is also at a lower level. So this is a fairly stable company. Yeah. Any debt to equity ratio less than 10% is considered to be stable. Profit growth. छोटी छोटी चीजें हैं जो आप प्लीज नोट करते जाना, बिकॉज जब आप एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करोगे इसको अपने स्क्रीनर में, तो दीज आर द वेरी माइन्यूट थिंग, वो भी देखना पड़ता है, राइट? मतलब स्टॉक में अगर हमें एक अच्छा पोटेंशियल स्टॉक ढूंढना है, जैसे प्रशांत वाज टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द पॉइंटर्स कि ये परसेंटेज इज समथिंग दैट इज गुड, जैसे डेट टू इक्विटी के बारे में प्रशांत ने बताया, राइट, कि कितना डेट मैक्सिमम हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी के पास हो. डेफिनेटली ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है, देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्री विच आर कैपिटल एक्सटेंसिव एज वेल, बट यहाँ पे व्हाट प्रशांत इज टॉकिंग अबाउट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, राइट, कि 10% अगर उसका डेट है तो इट इज स्टिल ओके, उसके बियॉन्ड है तो डेफिनेटली वील हैव टू लुक इनटू अदर पैरामीटर. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट आप इसको नोट करते जाओ सो दैट इट विल हेल्प यू. एंड दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि प्रैक्टिकल लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो वो आप प्लीज नोट कर लेना. And just to add, right, this is very industry specific. 10% might be relevant for auto ancillary, but आप construction में चले जाओगे, heavy industries में चले जाओगे, वहाँ पर 40-50% is very very standard. तो हर इंडस्ट्री का अलग नंबर होगा, उसके हिसाब से. इसलिए हमने लास्ट टाइम जो चीट शीट दिया था वो it was very specific to हर industry. So you can go back and look at that cheat sheet also. So next when we see is there a profit growth and sales growth? Yes, Aniket, anything? Okay. No, so next which we see was is there a profit growth and sales growth? Yes, if you see over 3 years, there is growth. Over 3 years sales, there is growth. Yeah. Last which we saw was promoter holding, right? So promoter holding, how good it is? It is almost 50% promoter holding and almost 98% is unpledged. That means promoter hasn't pledged his shares to gain in capital. Higher the promoter pledged shares are, the worse the stock is. So better, a good stock is a stock which has very minimal pledging of promoter holding. Okay, and if you see there is an interest with FIAs also in this stock. It is close to 6% FIAs hold in the stock, and also DIS, that is domestic institutional investors hold it. So this is a good stock. If we had an analysis done on auto ancillaries, maybe we would have had around 20 to 25 stocks. So our first level of screening got us to only one stock, which is actually very good. And to confirm whether it is good stock to continue holding it as a multi-bagger or not, we'll confirm it later at the end of our session, but this is a good pick for now. Yeah, so this is, let's say this is our first pick for the day. And which sector, next sector do you guys suggest?
Aniket, Kunal, should we go into healthcare maybe? Yeah, healthcare is good. Healthcare is good. Okay. So in healthcare, we have 4 stocks here. We'll start with our usual conditions. So whether the PE is lesser than the sectoral PE, industrial PE. So Vijaya Diagnostics, no, it is higher. Metropolis Healthcare is higher. Narayana Hrudayalaya is lower than industrial PE. Dr. Pathlabs is higher. So we have only one stock which we start looking further on it. Next, let's go to, let's see, ROE. ROE and ROCE for this healthcare industry, if it is higher than 20%, it is a good stock. Okay, these data which I'm saying here, which was already given to you guys in our cheat sheet, right? So you could go back, look into it, you'll get it. So here we have an ROE and ROCE of more than 30%. So second condition is done. Let's look into debt to equity ratio. Debt to equity ratio here, it is close to 0.41. So as Kunal and Aniket were mentioning about, see, debt to equity ratio changes from sector to sector. So for healthcare industry, any debt to equity ratio around 0.4 or 0.4, lesser than 0.4 is okay. Good, better value would be somewhere around 0.25 to 0.3. But then 0.4 is not bad in this case. In terms of sales and profit growth, Narayana Hrudayalaya has been an excellent stock. We could see here quarter profit growth is close to 151%. Sales growth is also excellent. Over 3 years, it's around 67%. And sales is also around 13%. So if we see it, let's say over 3 years, it has given around 49% returns. Yeah. So this is another good stock. Another condition which we had to check was promoter holding. Promoter holding for this is 63.85, which is a good sign. It is above 50%. The promoter holds in this company, and none of it is pledged. So this is another good pick which we have next to Jamna Auto, Narayana Hrudayalaya. So next sector. हाँ, और ये हम लोग हर एक स्टॉक जो है हम लोग एक एक करके देखेंगे एंड देन एट द एंड वी विल आल्सो लुक एट कि इसका टेक्निकल एनालिसिस कैसा है, कि इसका टेक्निकल एनालिसिस अच्छा होना चाहिए। कि एक लेवल है कि फंडामेंटली आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा है, एंड देन सारी शॉर्टलिस्ट करने के बाद हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे एक एक करके, एंड देन उसके बाद हमारा फाइनल पिक आ जाएगा। तो ये अभी करंटली हम लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं कि हमारे फंडामेंटल की साइड से कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं। तो ये भी हमने अपने सेशन में पढ़ा था, राइट, कि फंडामेंटल एनालिसिस कब करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताता है कि कौन सा स्टॉक बाय करना है, टेक्निकल एनालिसिस बताता है कि कब बाय करना है और कब सेल करना है, राइट। तो जो अनिकेत आपको अभी बता रहे हैं, तो फर्स्ट वी आर डूइंग द फर्स्ट पार्ट बेस्ड ऑन ओनली द फंडामेंटल, कि कौन सा स्टॉक अच्छा है। एक बार वो पता चल जाए, फिर देखते हैं कि उसमें एंट्री लेने का सही जगह पर क्या है, राइट। तो वो भी हम लोग कवर करेंगे। Okay, next let's maybe we'll look into it as one stock in fertilizers or agricultural. Let's see whether this is a good stock to invest in. Okay. We have here is fact, fertilizers and chemicals, Travancore Private Limited company. Market cap is around 25,000. Let's see, sectoral PE and industrial PE. Sectoral PE is quite, the PE of the stock is high with respect to industrial PE. So is this a good stock to go ahead with? Let's just look into other conditions and decide on it. So, but then our first condition wasn't satisfying. Let's look into other conditions. The return on equity is excellent. It's actually it's outstanding. It has given close to 84%. ROC is around 35%. Let's see sales and profit. Sales and profit has been also excellent. And if you see it over 3 years, it is tremendous. Let's see, over 3 years, it has given 95% returns. Last, let's see, debt to equity ratio is high. It's close to 1.45%. So
fundamentally there are issues in this company. One is the PE is high, the debt to equity ratio is quite high. But then for the last few quarters, this stock has been performing extremely well. Yeah. So see, this is an analogy which you could take in. Let's have this stock also part of our list, Aniket. What do you say? Because Yes. all our stocks which we... Yeah. Yes. So sometimes what happens is the valuation is high, but what we can see is that here the sales are very, very much high. So it's almost going at 500% profit year on year for the past 3 years, right? And the return on equity also is around 90%. 90% return मिल रहा है आपको 3 साल से 500% से कंपनी प्रॉफिट बढ़ रहा है सेल्स भी ईयर ऑन ईयर 30% से बढ़ रहा है विच इज अनप्रेसिडेंटेड है Yeah. तो अगर अगर इस रेट से कंपनी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली उसका वैल्यूएशन ज्यादा होगा बट अगेन दिस इज समथिंग इट्स अ मिक्स बैग राइट कि आपका वैल्यूएशन ज्यादा है आपका डेट ज्यादा है बट आपका प्रॉफिट सेल्स प्रमोटर होल्डिंग सब कुछ पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये मिक्स रिएक्शन है बट लेट्स लुक एट व्हाट द टेक्निकल एनालिसिस True. व्हेन वी कम टू टेक्निकल एनालिसिस देन वी विल से कि ये सच में खरीदना चाहिए कि नहीं Okay. So Basically, let's अनिकेत आप बोल रहे हो कि मतलब इतना हाई वैल्यूएशन है बट इट इज जस्टिफाइंग दैट हाई वैल्यूएशन राइट इतने रिटर्न इतना जो वो रिटर्न जनरेट कर रहा है इज जस्टिफाइड राइट इसलिए वो प्रीमियम पे काम कर रहा है इज इट समथिंग दैट पीपल कैन जस्टिफाइड है मतलब जस्टिफाई मतलब कर सकते हैं मतलब देयर इज अ रीजन व्हाई इट इज ग्रोइंग एट सच हाँ एग्जैक्टली जो हाई ग्रोथ कंपनीज होती हैं वहां पर भी यही हमें थोड़ा बहुत दिखता है कि उनका सेल्स 100 200 300% से बढ़ता है बट प्रॉफिट भी 300 400% से बढ़ता है बट उनका प्राइस भी काफी काफी तेजी से बढ़ता है तो यहाँ पर वही टेक्निकल एनालिसिस विल टेल यू कि एक्चुअली डज इट मेक सेंस टू बाय द स्टॉक नाउ और Mm-hmm. तो Yes, जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस we करेंगे saw this debt to equity ratio being 145%, right? So maybe the company has basically taken on debt to grow its capex tremendously, and that's the reason why profit and sales are increasing. Let's confirm this based on our once this is analyzed technically. Okay. So we have three stocks now. Which sector next? Next, I was actually thinking, see, with our economic growth going on, we should take something related with construction or infrastructure development. What could it be? Textiles, capital goods. Capital goods, electrical equipment is also a good sector to look. Let's see this infrastructure development. Rights or capital. Any other interesting companies? There's a lot of sectors. Yeah. Okay, let's in construction we don't have a lot of stocks here. There's only one stock that is REITs. So IT we are not taking, guys, on purpose because last time we spent all our time on IT, right? We analyzed some 40 stocks in the last conversation. So IT ko thoda sa, there's a lot of demand for IT in the chat. So we are purposefully skipping IT. Ceramic में देख लेते हैं ना ceramic is fine Kajaria. Yes, Kajaria. Only thing is market price is high. I was looking around 200 to 500 around stocks. Let's look into Triveni Engineering now. Triveni ले सकते हैं. Yeah, Triveni Engineering. Okay. So the first is PE. Then comparing with the sectoral PE, it is good. The valuation is fine. ROE is okay. It should be above 20%. It is just about 20%. ROCE should also be in above 20%, but it is below. That is fine. Let's see debt to equity ratio. Debt to equity ratio is at a higher level. It's around 30% for an engineering company. Preferred debt to equity is around 20% and below. So this is one thing. But the sales and profit is okay. It is not great as such. To go ahead on this. Sales is around 8% year on year. Let's see over 3 years, the returns which it has given. Previous returns is good. 77% is actually good. Promoter holding, the 0% pledged promoter holding. Promoter holding
has more than 50% एक holding in मिनट. this company. But I won't suggest this stock for an long-term fundamental multi-bagger bet, but we can take it in analysis. It is fine. So the point here that we are trying to reach, guys, is कि इस स्क्रीनर में ऐसा नहीं कि जो भी स्टॉक आ गया सारे स्टॉक को आंख बंद करके ले लेना, बिकॉज वो हमारे पैरामीटर पे फिट हो रहा था, राइट. उसके बाद मतलब दैट इज, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्क्रीनर, राइट. इट इज जस्ट स्क्रीनिंग, इट इज नॉट गिविंग यू द फाइनल रिकमेंडेशन, राइट. तो आप क्या करोगे कि नाउ एटलीस्ट यू हैव ओनली 36 स्टॉक्स टू बी एनालाइज्ड वर्सेस 150 जो हम लोग पहले देख रहे थे वर्सेस 2000 दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, राइट. तो ये 36 में आप फिर डीपर एनालिसिस करोगे, एंड एज प्रशांत इज शॉर्टलिस्टिंग एंड सेइंग कि ठीक है ये स्टॉक अच्छा नहीं, आई विल नॉट get into that, right, then get on to the another stock. So we selected two, we are kind of rejecting. So the idea is not only to do the selection, but किस stock को नहीं लेना है वो भी बहुत नहीं important है, right. तो now प्रशांत is doing that. तो वो भी एक important part है आप लोगों को समझने के लिए. Okay. और बात ये भी है कि सारे फैक्टर्स सब जगह पे सब सही नहीं होगा. आपको अगर सपोज 8-10 फैक्टर देखते हो तो उसमें से हो सकता है कि 1-2 फैक्टर नेगेटिव हो या ये नहीं. तो मतलब आपको ओवरऑल एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर फंडामेंटल भी करना पड़ेगा और फिर थोड़ा बहुत टेक्निकल भी करना पड़ेगा, एंड देन वी टेक अ फाइनल कॉल कि ये लेना है कि नहीं. तो इट्स ऑलवेज अ मिक्स ऑफ मल्टी फैक्टर्स. आपको सारे 36 गुण नहीं मिलेंगे. तो आपको थोड़े गुण कम मिलेंगे कभी ना कभी. तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा. नहीं डेफिनेटली. Okay, so we'll do one more stock. So we have 5 stocks in the list. I was chemicals. Let's take in miscellaneous. So here I thought we'll take in Green Panel Industries. Okay, Green Panel Industries. The stock PE is lesser than industrial PE. Let's see the ROE and ROCE. ROE is about 20%. That is good for this sector. ROC is also at a good point, and sales and profit is excellent over 3 years, and over 5 years it's around 450%. Sales, we don't have figures here, but over 3 years it is around 26%. Last quarter hasn't been good for Green Panel Industries. So this is a stock similar to Fact, which we had. But then let's see, debt to equity ratio is around, debt to equity ratio is lesser than 20%. That is actually a good sign in Green Panel Industries. Over 3 years, it has given 129%. So this is also a good stock to analyze, Kunal and Aniket. So we'll have this as a last stock, Green Panel Industries. So we first, I guess we looked in, we saw was Jamna Auto. Yep. Jamna, I forgot just. Yeah, Jamna Auto, correct. Yeah, auto ancillary stock, Jamna Auto. Then we looked into, which was the second stock which we looked into. We had fertilizers, yes. Jamna Auto was there, and Narayan Hridayalaya. Yes, healthcare. We looked into Narayana Hridayalaya. So the last fact about Hridayalaya. And what else did we see? We saw a miscellaneous stock, that is Green Panel Industries. Yeah. And last was Triveni Engineering, right? Yeah. So now we have 5 stocks: Narayana Hridayalaya, Triveni Engineering, Jamna Auto, Fact, and Green Panel Industries. Yes. Next, on to you, Kunal. ठीक है. so the first part देखो guys, हम लोगों ने कवर कर लिया है. अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने टोटल जो लिस्ट थे हमारे, राइट, 2000 या 5000 स्टॉक्स जो भी हैं, सबसे हटा के हमने एक 136 स्टॉक्स के इन एंड अराउंड फिगर आउट किया था, एंड देन वी ब्रॉट इट डाउन टू क्लोज टू 30-35 stocks, right. And then we started taking some example. Obviously all 35 should be analyzed, but definitely with the time crunch हम लोग सारे को नहीं एनालाइज कर सकते. तो हम लोगों ने 4-5 स्टॉक को एनालाइज किया. सो एज्यूम करते हैं कि ये 5 स्टॉक आर इन आवर रेडार. इनको स्क्रीन कर लिया हमने. अब हमें देखना है कि इसमें एंट्री लेना है कि नहीं लेना है, कब लेना है, राइट. इज इट द राइट टाइम टू एंटर, और अगर हम लोग एंटर करेंगे तो शुड वी डिप्लॉय द फुल कैपिटल, और शुड वी गो ऑन टू द पार्ट जहाँ पे हम लोग सिप करेंगे. सिप इज ऑलवेज बेटर, मतलब नो ब्रेनर है.
कि आप सिस्टमेटिकली उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, सो दैट जब वो अपने पीक पर होगा तभी भी आप इन्वेस्ट करो, जब वो अपने बॉटम पर होगा तभी भी आप इन्वेस्ट करो, तो एवरेज आउट हो जाएगा। और अगर उस स्टॉक में सस्टेनेबल रैली होगी तो आप डेफिनेटली उसमें काफी अच्छा रिटर्न ले पाओगे, राइट। तो हम लोग वो करते हैं, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड देन वी विल गेट ऑन टू दोज स्टॉक एक एक करके लेते हैं। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज हमारा टेक्निकल सेशन पेंडिंग है, वी विल नॉट गेट टू मच डीपर इनटू दैट। हम लोग सिंपल प्राइस एक्शन से फिगर आउट करेंगे कि प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या बता रहा है, कोई इमीडिएट हर्डल है क्या, और उसके लिए हम लोग कोई थोड़े लंबे टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे। तो अब आप लोग बताओ कि अगर ये स्टॉक मुझे एज्यूम करो 2 से 3 साल के लिए लेना है तो मुझे कौन सा चार्ट देखना चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम का चार्ट देखना चाहिए? आई वुड लव टू सी इट इन द चैट। Someone is saying daily and monthly, one day chart, weekly, monthly, daily, 1 hour, 1 year. Okay, ठीक है। डिवाइडेड है थोड़ा ओपिनियन, लास्ट 3 years ऑल्सो चलेगा। आई थिंक वी हैव गॉट मोर देन लाइक 300 responses already. I'm not able to read, but I got it. Some people are saying that we should be thinking about hourly also. सो विजय, आर्ली तो डेफिनेटली नहीं देखना चाहिए बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं a return which is in a quantum of like 50%, 60% over next 2-3 years or so, right? तो वहां पर आर्ली में गिव यू मे बी आर्ली से आपको 1-2% का अंतर पड़ेगा, बट इन अ लार्जर स्क्रीम ऑफ थिंग, राइट, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं 50%, 60% का, वहां पर दीज 1-2% हियर एंड देयर डजंट मैटर, राइट, इन टर्म्स ऑफ एंटरिंग, राइट। तो कोई एग्जैक्ट एंट्री एंड एग्जिट नहीं होता है फॉर अ लॉन्गर टर्म, बट एक सेंस चेक ये हमें दे देता है। तो हम लोग अभी एक चार्ट पे लेके जाते हैं स्टॉक्स को, उसके बाद उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। सबसे पहला स्टॉक हमने क्या फाइंड आउट किया था? जमुना ऑटो, राइट? या जमुना ऑटो, ये है जमुना ऑटो का चार्ट। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, मंथली चार्ट से स्टार्ट करेंगे। और कैसा लग रहा है इसका मंथली चार्ट आप लोगों को अभी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ओवरऑल मंथली चार्ट? में सारे पैरामीटर हटा देता हूँ सो दैट चार्ट नीट एंड क्लीन दिखे आपको। और ट्राई करते कोई इंडिकेटर नहीं लगाए, ठीक है, सिर्फ एक वॉल्यूम रहे और प्राइस एक्शन रहे। क्या लगता है इस चार्ट को देख के आप लोगों को? इज इट अ गुड स्टॉक टू एंटर एट दिस पॉइंट इन टाइम? ठीक है, गुड टू सी कि काफी सारे लोग जो हमारे पहले के वेबिनार में आए हैं, 1-2 टॉपिक हमने कवर किया, उसके हिसाब से पीपल आर सेइंग कि नो वी शुड नॉट एंटर, एंड एब्सोल्युटली यहाँ पे 2 चीजें हैं, राइट। सो बहुत ही कॉन्ट्रेरियन व्यू रहेगा आप लोगों को, बट फिर भी हम लोग एक देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देयर इज अ व्यू, जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनके लिए, क्योंकि ये स्टॉक जो है ये डाउन ट्रेंड में है, राइट। और मैं सारे सिग्नल हटा देता हूँ सो दैट बायस ना हो हम लोग सिग्नल से। हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि ये स्टॉक ने एक ट्रायंगल बनाया था, ये ट्रायंगल को तोड़ रहा है और ये मंथली क्लोजर के हिसाब से इट इज इन अ डाउन ट्रेंड, एंड ये कंफर्म कर रहा है कि डाउन ट्रेंड है। बट अगर मुझे इसमें अगर एंट्री लेनी है फॉर अ लॉन्गर टर्म, क्योंकि फंडामेंटल इस कंपनी के अच्छे हैं, इट हैज शोन अ वेरी गुड रन, राइट। आप यहाँ पर से देखोगे 2020 से इस स्टॉक ने 20 रुपए से जो रैली दी है वो 130 के अराउंड दिया, राइट। तो आप देखो कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट 6 times हो गया था विद इन 2.5 year, राइट। So it has already given a multi-bagger return, if you will ask me. Now there are 2-3 things that are very very important. अगर हम लोग यहाँ पर इस स्टॉक में बेट लेते हैं बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स, राइट, तो हम लोग को यहाँ पर, आप लोगों को ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है, बट मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक सपोर्ट भी दिखता है। मुझे लगता है कि ये एक सपोर्ट क्लस्टर है। अगर यहाँ पर मुझे ये स्टॉक मिल जाता है तो आई कैन डेफिनेटली एंटर इनटू दिस स्टॉक, क्योंकि यहाँ से अगर ये रिवर्सल होता है, बट अगेन दिस इज लाइक, अगर ये रिवर्सल होता है तो इफ आई एम गोइंग फॉर अ प्योर प्ले टेक्निकल,
then I will wait for entry, right? I will not take an entry. बट अगर मेरा व्यू 3 4 5 साल का है, मुझे पता है कि ये फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है और ये 200-300% ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर इन टर्म्स ऑफ ऑल इट्स रेवेन्यू, देन ये जो करेक्शन है आई विल कंसीडर दैट एज अ प्रॉफिट बुकिंग जोन, बिकॉज ये देखो ये स्टॉक 20 रुपए से लेके 135 रुपए तक गया था, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ टाइम जहां पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। यहां पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वेट करूंगा स्टॉक को कंसोलिडेट होने का, और अगर मैं इसमें एंट्री लेता भी हूं तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दूंगा 92 रुपीज का, विच इज लाइक 5-6% का है, एंड 5-6% इज नॉट अ वेरी बिग नंबर इन अ लॉन्गर रन। तो अगर मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूं तो मैं बोलूंगा कि फॉर अ लॉन्गर टर्म इवन आई in this stock, for a longer run I can still take an entry into this stock with a very small 5-6% of risk, which will give me a upside of another 30-40% in another 1 or 2 years, right? क्योंकि जब ये स्टॉक फिर से जब प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन का फेज होता है, वो फेज अगर यहाँ पर चलता है तो दिस स्टॉक इज अ वेरी गुड स्टॉक फॉर अ लॉन्गर रन। तो माई सजेशन अगर मुझे खुद में लेना रहता तो आई विल स्टिल गेट इनटू दिस स्टॉक फॉर अ लॉन्गर रन। अगेन द पॉइंट हियर इज फॉर अ लॉन्गर रन, बिकॉज यहाँ पर मुझे काफी बार मंथली सपोर्ट दिखता है। यहाँ पर देखो इस प्राइस पर कब आया था, फेब में आया था, फेब 22 को, दूसरा बार यहाँ आया था, तीसरा बार यहाँ आया था, 4-5, एंड दिस इज द 6th टाइम इट इज ट्राइंग टू टेक अ सपोर्ट हियर। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट है। जब भी ये 90 से 95 के बीच में आता है, यहाँ पर बाइंग फिर से इमर्ज होती है, विच इज एक्चुअली वेरी मच शोन इन लास्ट 1.5 ईयर का जो भी आपने यहाँ पर देखा है टोटल चार्ट, उसके हिसाब से। तो इफ आई हैव टू टेक इट फॉर अ लॉन्गर टर्म आई विल, एंड मेरा लॉन्गर टर्म मिनिमम 2 से 3 साल का है यहाँ पर, नॉट लाइक 6 मंथ को मैं लॉन्ग टर्म बोल रहा हूँ। अगर मेरा व्यू 6 मंथ एज अ लॉन्ग टर्म है तो आई विल नॉट टेक एंट्री, बट मेरा व्यू 3 मंथ्स है तो दिस इज अ गुड टाइम फॉर मी टू टेक एन एंट्री विद अ वेरी वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। अगर ये इसके नीचे जाएगा देन मे बी दिस स्टॉक में टच अराउंड 60-65 और सो, तो मैं वहां पर दोबारा उसको लेने का ट्राई करूंगा, बट अदरवाइज दिस इज नॉट अ बैड स्पॉट टू टेक एन एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जो हमारा जो शॉर्ट टर्म का जो व्यू था और लॉन्ग टर्म का व्यू कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है, राइट? अगर ये शॉर्ट टर्म में मुझे लेना होता तो मैं बोलता कि ये स्टॉक इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू लॉसेस, तो इसको सीधे हमें निकाल देना है, या फिर अगर आपके पास हो तो या तो इस स्टॉक में मैं पी बाय करूंगा रादर देन सी ऑन अ इंट्राडे पे, अगर मुझे ये चार्ट दिखता है तो। बट फॉर लॉन्ग रन मैं बोल रहा हूँ कि इसमें बाय करना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ गुड वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू बाय, राइट? सो दिस इज वन वे टू लुक एट इट। द अनदर इज fact, right? Okay, fact is 15% up today. ठीक है, तो फैक्ट में देखो क्या हुआ। फैक्ट में 160, आई थिंक हमारा ये कॉल भी था समवेयर अराउंड सितंबर अक्टूबर, आई डोंट रिमेम्बर व्हेन, बट इट वाज वन ऑफ आवर कॉल एज वेल। ये स्टॉक एंड इट वाज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 130-40 के रेंज में जब वो ट्रेड किया करता था, तो एंड दिस वाज अ कंसोलिडेशन जोन, राइट? तो ये मंथली चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं, देखो इतना दिन कंसोलिडेट किया है, उसके बाद उसमें रैली आई है, और रैली कितना आया है यहाँ से लेके 150 से लेके ये स्टॉक 317, तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मंथ में ये डबल से भी ज्यादा हो गया, राइट? 2.5 टाइम हो गया है, एंड नाउ करेंटली ट्रेडिंग एट 391 का रेजिस्टेंस। तो अभी क्या है, इसके हिसाब से मैं देखूंगा तो मुझे तो ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप ट्रेंड में है, आज भी 15% भागा है, राइट? बट मुझे अगर ये लॉन्ग टर्म में लेना होगा ना, तो आई विल नॉट टेक दिस स्टॉक एट दिस पॉइंट इन टाइम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वैल्यूएशन का बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे कि 500% आई थिंक इसका सेल्स ग्रोथ था, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो जब अनिकेत ये बता रहे थे, तो आई विल स्टिल वेट फॉर दिस स्टॉक टू रिट्रेस। I will wait for this stock either to give me 2 month consolidation in and around 400 or so. Otherwise valuation काफी हाई है, और जब ये स्टॉक जब मूव हो रहा है तो एक एक मंथ में ये 155 टाइम्स हुआ, नेक्स्ट मंथ में 20% गिरा, फिर 21% गिरा, फिर उसके बाद में 67% बढ़ गया, तो काफी वोलाटाइल है ये स्टॉक। तो अगर मुझे ये लॉन्ग टर्म में बेट करना होगा तो मैं इसको थोड़ा सा लोअर वैल्यू पे बाय करना चाहूंगा देन अ हायर वैल्यू।
So यहाँ पर मैं बोलूंगा कि I will wait for it to consolidate for couple month and then maybe I can be very very confident about it. वहाँ पर मैं ये stock ले सकता हूँ and then gun for another 30, 40, 50% in maybe a 1-2 year horizon. But again, if अगर ये मुझे stock short term में लेना होता तो this would have been a very good stock for me because मैं trend पे ले रहा हूँ, right? मैं सिर्फ trend के हिसाब से ले रहा हूँ, मैं कोई भी और पैरामीटर नहीं देख रहा हूँ. तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो मैं इस स्टॉक में वेट करना चाहूंगा देन इमीडिएटली बाइंग. क्योंकि हो सकता है कि आज आप ले लो और वो कल के डेट पे वो 15% ऊपर भी चला जाएगा, बट जब हम 3 ईयर का होराइजन देखते हैं तो फिर से वो करेक्ट भी होगा, फिर से वो नीचे भी आएगा. और वो टाइम वाइज करेक्शन बोलते हैं उसको, प्राइस वाइज करेक्शन एंड टाइम वाइज करेक्शन, दो अलग अलग टाइप के करेक्शन होते हैं. तो उसमें इस स्टॉक में अभी टाइम वाइज कोई करेक्शन नहीं हुआ है. प्राइस वाइज हुआ था इमीडिएटली, बट टाइम वाइज करेक्शन इज वेरी मच नीडेड. जब भी हम लोग फंडामेंटल का बात करते हैं तो वहां पे टाइम वाइज करेक्शन होना चाहिए. प्राइस वाइज करेक्शन हो चाहे नहीं, वो डजेंट मैटर. यहाँ पर क्या हो, प्राइस वाइज करेक्शन हो, ऊपर गया तुरंत में नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, मतलब एक एक वीक में आप देखोगे 20-20% ऊपर नीचे हो रहा है. तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर अ लॉन्गर टर्म बेट. हम शॉर्टर टर्म बेट के लिए दिस इज द बेस्ट, लॉन्गर टर्म के लिए इट इज नॉट. तो यहाँ पर आप एक चीज रिलेट करके देखो कि जब कोई स्टॉक को लॉन्ग टर्म में बाय करते हैं तो व्यू कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ता है देन अ शॉर्टर टर्म, राइट? सो दिस इज द सेकंड स्टॉक. व्हाट वाज द थर्ड स्टॉक, प्रशांत? एंड इसमें इसमें एक बात भी थी कि इसमें वो -30% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप हुआ. इसमें वो साइकिल का भी इफेक्ट दिखता है आपको, कि हाँ. आपको एक एग्रीकल्चर साइकिल का भी एक आता है. क्योंकि हर कुछ कुछ क्वार्टर्स में अगर रेवेन्यू ड्रॉप हो जाता है या, तो यहाँ पर वो साइक्लिकल नेचर भी है ये स्टॉक में. तो उस टाइम पे इसकी वजह से सेल्स गिर गए, 30% प्रॉफिट 30% गिर गया था. So those also factors need to come into picture. So when we were Yeah, discussing the fundamental parameters, we also said that we will look at it. We will try to relate to how the technical parameters get impacted. करेक्ट. वो उसमें दिख रहा है. ठीक है. सो उसके बाद हमारा क्या था थर्ड स्टॉक करने के? Arana Fidela. तो ये स्टॉक जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है. इसने भी काफी अच्छी रैली दी है इन रिसेंट टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड लुक एट द चार्ट, और दिस चार्ट इज लॉट मोर कन्विंसिंग देन द प्रीवियस चार्ट. क्योंकि इसमें देखो, इसमें अपसाइड हुआ है, टाइम वाइज करेक्शन हुआ, 4-5 महीने यहाँ पे गुजारा है इसने, फिर यहाँ पर गुजारा है, फिर यहाँ पर गुजारा है. तो हर बार वो एक बार कंसोलिडेट करता है एंड देन इट मूव्स. तो यहाँ से ये 10-12% रिटर्न इज ओके इन अ लॉन्गर टर्म चार्ट. अगर वो 2 महीने में अगर इसने 20% की रैली दी है, इट इज स्टिल ओके. 2 महीने में 150 दे रहा है, देन आई एम कंसर्न. तो मेरे हिसाब से ये चार्ट मुझे ज्यादा अच्छा लगता है ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, क्योंकि ये एक कंसोलिडेट करता है फिर बढ़ता है, फिर कंसोलिडेट करता है फिर बढ़ता है, फिर कंसोलिडेट करता है फिर बढ़ता है. तो दिस मे बी अ गुड स्टॉक टू एंटर इन सिप, राइट? इसमें भी क्या है, सिंस देयर हैज बीन अ रैली, तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर सकता है, आपके कैपिटल काफी टाइम के लिए ब्लॉक हो सकता है. तो यहाँ पर कुछ एक छोटा पोजीशन बनाया जा सकता है एंड देन वी विल टेक फर्दर बेटर पोजीशन. तो दिस इज नॉट अ बाइंग डिसीजन वी आर टेकिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती है. तो मैं टेक्निकल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ. डेफिनेटली आई विल टेक इट बैक टू प्रशांत एंड देन प्रशांत एक बार फिर से उसको इवेल्युएट कर लेंगे. एंड बेस्ड ऑन दैट आपको 1-2 दिन में कोई ना कोई कॉल, इन चारों पांचों में से कोई ना कोई 1-2 स्टॉक का कॉल मिलेगा हमारे ऐप पर. तो जस्ट स्टे ट्यून्ड, राइट? मतलब इमीडिएटली डू नॉट जंप ऑन टू इट कि हाँ ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है मैं आज ही बाय कर लेता हूँ. लॉन्ग टर्म में 2-4-5-10% से कुछ नहीं होता, ठीक है? So this is the third stock. Or what was the fourth one? I think the last one. Triveni Engineering. Any engineering. हाँ, ये स्टॉक में देखो, ये स्टॉक में काफी टाइम वाइज करेक्शन हुआ है, राइट? यहाँ पर आया है पूरा, उसने एक रैली दी एंड देन कंसोलिडेट करा. अभी ये दिस कैन बी अ गुड एक्यूमुलेशन जोन, राइट? अगर वो टेक्निकली अच्छा है एंड दिस इज द एक्यूमुलेशन इज हैपनिंग, देन दिस इज अ गुड जोन. यहाँ पर हम लोग एक पोजीशन बना सकते हैं एंड देन वी विल अगेन मूव अप. तो आई विल डेफिनेटली टेक इट अप विद प्रशांत ऑल्सो अगेन दीज ऑल दीज स्टॉक. बट मैं टेक्निकल के हिसाब से बता रहा हूँ कि कंसोलिडेशन इज ऑलवेज गुड. For a longer term, consolidation is the best thing that happens to the stock. For a shorter term, consolidation is the worst thing that happens to a stock, because हमारे जैसे लोग जो कि ऑप्शन बाइंग करते हैं उनके लिए ये हमेशा प्रीमियम ईटिंग टाइम होता है. बट फॉर अ लॉन्गर रन इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग कि स्टॉक ने एक मूवमेंट दिया, फिर थोड़ा सा पॉज लिया, फिर थोड़ा सा मूवमेंट दिया, फिर थोड़ा सा पॉज लिया, एंड देन अगेन इट विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट मूव, राइट? So this is what is the technical view that I had to share about these 4 stocks. There's one more stock, Kunal, Green Panel Industries.
इस स्टॉक में भी काफी रैली हुई है रिसेंट टाइम में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yep, last 3 months से it is moving up and आप यहाँ पर देखो कि this stock can be a good stock, right? इसने क्या किया है, consistently last 3 months में छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, right? वॉल्यूम वाइज भी आप देखो तो अभी वी आर स्टैंडिंग एट अराउंड 14, तो अभी आधा महीना भी नहीं हुआ, बट इसका जो वॉल्यूम है वो पिछले महीने के से ऑलरेडी ज्यादा, आधा हो चुका, आधा से ज्यादा हो चुका है। इनफैक्ट दिस वाज 9 million and this was 4.3, so basically अभी हाफ ऑलरेडी हो चुका है। Stock is in uptrend. You may see some good movement up until, based on the technical chart. So is the very near term target. Near term मतलब कि 4-6 महीने में आ सकता है, but this stock has very good potential to move up to this level minimum, right? तो यहाँ से ये डबल होने का इसमें potential है in a year or so. So this stock is again a good entry point, मेरे को ये दिखता है। And अभी हम लोगों ने कोई और इंडिकेटर नहीं लगाया। Definitely when we look into a technical analysis for a longer term also, तो हम लोग काफी सारा एंकर्ड वीवैप बोल के देयर इज अ कंसेप्ट, हम लोग वो लगाते हैं, काफी सारा पैरामीटर लगाते हैं। अभी मैं आपको सिंपल प्राइस एक्शन पे ही बता रहा हूँ, सिर्फ चार्ट में कैंडल स्टिक के हिसाब से बता रहा हूँ, कुछ भी ड्रॉ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो मेरे हिसाब से दिस कुड बी वन ऑफ द गुड स्टॉक टू एंटर, बट डेफिनेटली प्रशांत विल टेक अ कॉल वंस वी विल डू ऑल द एनालिसिस विद इन आवर टीम एंड देन यू गाइज विल गेट टू नो मे बी इन अ डे और टू। ठीक है, सो अनुज, आई थिंक दीज आर द थिंग दैट वी वांटेड टू कवर टुडे इन आवर। थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं कुणाल, गिवन ट्रेड तो हमने इसमें किसी में लाइव लिया नहीं है, ट्रेड नहीं रहा था, इसमें किसी में इन्वेस्ट नहीं किया है हमने, तो क्वेश्चंस ले सकते हैं थोड़े से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में। इफ यू वांट अस टू चेक एनीथिंग देन लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू स्टॉक्स। RVNL डेफिनेटली देख सकते हैं, RVNL, मे बी वी कैन गो बैक टू स्क्रीनर। कुणाल, इफ दिस इज योर स्क्रीन देन मे बी आपकी स्क्रीन में ही वी कुड गो बैक टू स्क्रीनर so that technical और fundamental दोनों एक जगह दिख जाए। I think Prashant will have that, so okay, no worries, no worries। तो प्रशांत, you can bring it up, एक बार स्क्रीनर में वो देख लेते हैं कि RVNL में क्या दिख रहा है, और 2-3 एग्जांपल्स ले लेते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, और टेक्निकल आज के लिए छोड़ देते हैं। आई थिंक टेक्निकल के लिए वी आर स्टिल वेटिंग फॉर आवर 1 जुलाई सेशन टू गेट डन, तो 1 जुलाई सेशन के बाद में टेक्निकल सारे ले आएंगे। अभी लेट्स स्टिक टू एज मेनी फंडामेंटल पैरामीटर्स एज वी कैन। तो ठीक है, फेयर इनफ। तो आई हैव लाइक 10-12 नेम्स हियर, उसमें से वील ट्राई टू पिक समथिंग अप, राइट? जो भी हमारे पास फर्स्ट 8-10 नेम्स आए यहाँ पर। RVNL ऑफ कोर्स पहले भी आया था, रेल विकास निगम लिमिटेड, तो उसका एक क्विक एनालिसिस कर लेते हैं। Is my screen visible now? Yeah, Prashant. Okay. So the PE ratio, the valuation, if you see, it is at a good valuation with respect to the sectoral valuation. Industry PE is around 34.9, stock PE is 18.3, so that is good. ROE and ROCE, if it is about 20%, it would have been better, but 19.7 is almost there, so it is okay. Sales and profit growth over 3 years, over 5 years, it is giving a good amount of sales, but not it is not giving outstanding returns as such. Okay. In terms of debt to equity ratio, it is at a higher level, and promoter holding, let's see, unpledged promoter holding is good. That is it. Promoter holding is around 78%. That is good. Over the last 1 year, it has given around 295% returns. So this is, I won't suggest this for a longer term in terms of 5 to 7 years, but for maybe a year to 2, it is a good stock. Super. So let's take the next one very quickly. The next one, at least bunch of questions have come in, और थोड़ा 2-3 दिन से बहुत न्यूज में भी है और प्राइस भी बहुत रैपिडली बढ़ा है। टाटा कंज्यूमर, so overall FMCG sector is doing pretty good after the CPI inflation data has come, जहाँ पे it was declared कि inflation rate has gone down, right? And mainly जो food के जो भी products थे वहाँ पर थोड़ा सा pricing कम हुई है, which is always good for the FMCG sector, right? Because उनका raw material में काफी सारा material is I mean उनका जो cost होता है उसमें input का cost काफी ज्यादा होता है,
तो अगर प्राइस सॉफ्टनिंग हुई है तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुआ है। दूसरा, यूजर्स के लिए भी दे डू नॉट हैव टू टेक अ प्राइस हाइक एंड ऑल, तो उनका सेल्स पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो इसलिए सारे जो भी एफएमसीजी के जो भी स्टॉक्स हैं इन रिसेंट टाइम 3-4 दिन में आप देखोगे तो उसमें काफी अच्छा मूवमेंट हुआ है। टाटा कंज्यूमर इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। आप Yeah. एचएल देख लो, डाबर देख लो, सारे स्टॉक में अभी रैली हो रही है। बट प्रशांत, you can definitely continue on other aspect, but I just wanted to relate it with the news as well. Yeah, sure. So Tata Consumer Product, if you see, it is valuation is quite high with respect to the stock P and industry PE. Debt to equity ratio is okay. It is actually good. Debt to equity ratio is good. ROE and ROC, it isn't convincing enough for a medium to long term trade. So in this sector, there are a few other good stocks which I could suggest than Tata Consumer. So, for example, let's take in ITC is a good stock. So on a valuation perspective, it is not grossly overvalued in comparison to Tata Consumer Products. Debt to equity, it is basically zero debt company. The return over 3 years is around 32%, but return over the last 1 year is around 68%. So ITC is a better bet than Tata Consumer Products. Fair enough. Maybe we could take a different sector. I'm just going back to the list here. Can we take NAM? Coming in, which stock did you say? NAM, NAM. NAM Securities Limited. Yep. Okay. This, I guess the value is wrong in this stock. Maybe a screener, some problem with screener as such, because it can be 899. No. So see, NAM के लिए the problem is कि एक तो बहुत ही छोटी कंपनी है. अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट फिल्टर में ही खत्म हो जाएगी ये कंपनी. आई थिंक दिस इज अंडर 50 crores. अगर आप NAM में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसकी जगह मैं बोलूंगा आप लिक्विड में इन्वेस्ट कर दीजिए. But NAM, from a value investing perspective, purposefully kind of chose the name because बहुत ही छोटा है. देखिए, आप 27 crore की कंपनी है. अगर आपके पास 1 crore रुपए, तो आप इसके स्टॉक को कुछ भी कर सकते हैं जो आप चाहें. तो and I don't think ये NSE में listed है. ये NSE है कि I think completely BSE stock है. Yeah, this is a BSE stock. See, the volume is so low. 72 stocks, 2 stocks. This is a really bad stock. Yeah, Welspun ले लेते हैं. I think श्रीधर का Welspun पे 2 बार रिक्वेस्ट था. Welspun ले लेते हैं. टाटा कॉम ले लेते हैं. कौशल का टाटा कॉम पे था एक क्वेश्चन. I think दोनों कवर कर सकते हैं quickly, and I think we are moving closer to 3:30. So see guys, अगर हम लोग कुछ questions answer नहीं भी कर पाए, तो what you need to really look at is the pattern that we are following, right? We start with market cap, we look at stock P, compare it with industry P, then look at ROE, ROC, last 3 years, last 5 years, and then kind of start forming a view. Plus last session की जो recording है, जो 3rd June का session है, you just play out the last 40-50 minutes जहाँ पर we are building the screener. तो उसमें step by step process है. We are taking these questions so that वो थोड़ा सा revise हो जाए. But unless you do it for your own stocks, like a lot of stock names have come in, Elcon Engineering, Uday Cement, RCF, CDSL, etc. वो आप एक बार खुद से जाके भी देखिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो लॉन्ग टर्म लीमो आपको वैसे भी इनफाइनाइटली एक्सेसिबल है, राइट? आपके पास उसका लाइक अनलिमिटेड लाइसेंस है टू आस्क लीमो एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन. लीमो से जाके आप वैलिडेट कर सकते हैं. तो वी आर टेकिंग दीज stocks as samples, right? आप खुद से भी इसको टेस्ट करिए, लीमो से पूछिए and figure out कि how accurate is your analysis on some of these stocks. But Welspun एक बार ले लेते हैं यार. Okay, fine. So textile sector wise, it's been on a downtrend for the last 2 quarters, and this quarter also it is a downtrend. We could expect a revival in textile sector maybe in Q4 of this year. Okay, but in general, how this stock fundamentally is, valuation is okay. Profits over 3 years, over 5 years, it's been bad. But sales has been increasing over 5 years. It's around 6%. But return over 1 year is 46. Although this is a good company, the figures here are not convincing enough to have it for a longer term.
So इसमें एक बार प्रशांत Welspun Enterprise भी देख लेते हैं, right? Apart from Welspun India. Yeah, Welspun Enterprises, it's an excellent stock to go ahead with. The stock is quite good valuation, return of equity and ROC is around 11%. Fine, profit and sales has been increasing tremendously. Return over year is around 80%. Debt to equity ratio is less than 40%. That's good. Promoter holding is more than 50%. Yeah, this is a good stock to invest in. Yep. और इसके अंदर see, I think the question that Sridhar was asking was कि is there any target, right? So Sridhar, two things. One is we are looking at the stock more from a value investing perspective. So take a long horizon. If you want to look at target, of course, you could look at the technicals in tandem. The stock, at least from a Welspun Enterprise perspective, I think the stock is very near to its lifetime high, right, which was somewhere around 200. Right now, it's in the 180, 190 zone. It's been on a constant uptrend. So, like, if you are looking at it from a short-term perspective, then a lot of other things will kick in, right? In terms of how we look at the target once it breaks the lifetime high and it's in a resistance zone at this point in time from a technical point of view. So wait for our, again, 1st July session. Usme we'll talk about how to find out targets for this. Otherwise, from a value investing perspective is what Prashant is saying. It's a good stock to remain invested for a longer term. Yeah, long term you can. So long term, sir, there is no target, right? If you're saying long term and asking a target, that's like slightly contradictory, right? There's like the stock. Who could know? Like if we were buying the stock somewhere like 3-4 years back, even like towards the starting of 2020, you would have never been able to predict that 40 rupees stock will go to whatever 200 rupees again. So from a long term perspective, there's no point of putting a target, right? It's more about how long do you want to remain invested and why are you putting money in a long-term stock for? Okay. Maybe one or two more and then we could open it up for any kind of other questions. So target again. All target questions we are just ignoring. The idea for getting into a long-term investment is not so much from a target point of view. And again, targets we'll calculate and we'll talk about when we do our technical session. Right now, we haven't covered technical as part of Academy. So we are not doing targets here. Maybe one or two more. Most standard one, Tata Motors or Reliance Industries, both are like top of the charts when it comes to number of searches that happen on liquid every day. We could take anyone and maybe Colpal. Yeah, Laksha, we could take Colpal. Colgate Palmolive is a very interesting stock. We could take that as well. Yeah, Colgate Palmolive, very good valuations for the company. ROE, ROC, excellent, outstanding actually. Yep. Debt to equity is also very good in terms of it's hardly 4%. And return over 1 year is okay. Return over 3 years is around 70%. That's very good. Unpledged promoter holding is above 50%. It's a good stock. Generally, this is an excellent stock which you could hold for 3 to 5 years. So thank you so much again. Great talking to all of you. Thank you so much for joining in and staying back till 3:40 today. Thanks, guys. Bye-bye. Yeah.